All right, that's done. So disk is done. Now we need to look at a hollow sphere. ठीक है, so sphere could be of two types, hollow sphere and solid sphere. ठीक है, again we are talking about uniform. ठीक है, so what was this? I don't know. This is uniform hollow sphere. Okay, uniform hollow sphere, mass m, radius r. Now tell me, so I have to find out, I'm telling you, I have to find out the moment of inertia about any of its diameter. ठीक है, मतलब this is a sphere, 3-dimensional, I can only draw 2D. ठीक है, so the axis is passing through any of its diameter, it's exactly the same. ठीक है, any problem? Okay, now the question is, what should I choose as the representative element? What is this sphere made up of? Rings. What kind of rings? ठीक है, so the axis I'm choosing is, the axis I'm choosing, ठीक है, चलो, this is the axis I'm choosing. इस plane में this is the axis I'm choosing. That will make it convenient for you. ठीक है, this is the axis I'm choosing. ठीक है, so what are those rings? How are those rings arranged? एक के ऊपर एक. This is the axis. This is the axis. Okay, so have you ever cut an onion? ठीक है, how do you cut an onion? पहले उसको छीलना पड़ता है, उसे आंसू आता है, फिर छोड़ देते हैं. Okay, so you take an onion, ठीक है, and how do you slice it? ठीक है, when you make onion rings, ठीक है, when you make onion rings, how do you slice it? So you take the onion, chop, 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 you chop ऐसे vertically. ठीक है, so the same thing I'm asking you to do it. ठीक है, so this is your onion, and then you chop like this. ठीक है, so you put a chop over here. हाँ, सोच के बोल. अनियन मतलब अनियन में तो ठीक है डिस्क निकलेगा, बट दिस इज हॉलो स्फीयर, लेट्स से अ प्लास्टिक बॉल, उसके अंदर कुछ नहीं है. ठीक है, यू चॉप इट हियर एंड थोड़ा अंदर यू चॉप इट हियर. ठीक है, व्हाट विल कम आउट? अ रिंग, अ पतला सा रिंग, एंड व्हाट विल बी दैट थिकनेस? दिस विल बी दैट थिकनेस. इज दैट करेक्ट? एक पतला सा रिंग ऐसा निकल के आएगा. इज दैट करेक्ट? ठीक है, so all we need to do is we need to find the moment of inertia of that small ring. So what is that? So you chop it here. तो कौन सा रिंग मिलेगा? मेरे को ये वाला रिंग मिलेगा, मेरे को ये वाला रिंग मिलेगा. ठीक है, so all of these rings, if I stack it sideways, I'll get the entire hollow sphere. Is that correct? ठीक है, so is this clear? What will be your representative element? ठीक है, that is clear. It would be rings. कैसा rings? ऐसा rings. Is that clear? Okay, now we have to understand how do we choose a position, or how do we choose, yeah, basically how do we choose the position for the ring. Okay, so we are going to do it in this way. Okay, so this is my axis. What I'm going to do is I'm going to go to an angle theta, then I'm going to go a further angle d theta. ठीक है, so you'll find a point over here, and you'll find a point over here. Then I'm asking you to put a slice over here, and then put a slice over here. Is that correct? ठीक है, so this is the cross section. I'm showing you the cross section. Suppose this is the, or I can show it like this. ठीक, so suppose this is the entire hollow sphere. ठीक है, so what I'm showing you is अंदर का part. ठीक, so अंदर के part से what you do is, ठीक है, अंदर के part से what you do is, यहाँ पे center पे गए, so you go to an angle theta यहाँ पे, and then you go a further angle d theta. ठीक है, so first chop, first slice you make it here, then you have gone a further angle d theta, you make another slice over here. So what will come out? A ring will come out. ठीक है, now very carefully tell me what will be the thickness of that ring. D theta thickness. What will be the thickness of that ring? This will be the thickness of that ring. सोच के देखो,
सोच के देखो, ठीक है. सो इट्स हियर. सो सपोज ये थीटा. सो दिस फिंगर का ये पार्ट इज थीटा, इस फिंगर का ये पार्ट इज डी थीटा. थीटा d theta. So when I cut it, what will come out? A ring will come out with thickness what? The thickness of my finger. What is that thickness? That thickness is this one. Is that correct? How much is that? rd theta. ठीक है. So we should be very careful in understanding this. ठीक है. Theta angle पे गए. Then we go a further angle d theta. ठीक है. Theta angle पे we make a slice. फिर theta plus d theta angle पे we make a slice. So we'll get a ring like this. ठीक है. We'll get a ring like this जिसका thickness कितना होगा? जिसका thickness ये होगा. And how much that thickness would be? It will be rd theta. ठीक है. If you want to visualize this better, go home, chop an onion. ठीक है. No, actually do this. It's exactly like that. ठीक है. Go home, chop an onion. Sketch pen ले लेना, theta mark करना, d theta mark करना, see what comes out. Clear? क्यों? तेरे को किचन में घुसने नहीं मिलता है ना? Obviously को घर में कैसे घुसने मिलता है? Alright. Okay, so this is rd theta. Is that clear? Okay. So that ring that comes out, be very careful with that. The ring that comes out has a thickness rd theta and has a radius. सोच के बोल. Has a radius r. R is what? What is the radius of that ring? The radius of that ring is this one. ठीक है. This one or this one does not matter. Why it does not matter? Because it's a very thin ring. ठीक है. This is the ring ना? This is the ring which has come out. So what is the thickness? What is the radius? This is the radius. Is that correct? This is the radius. So if this length is r and this angle is theta, this length would be how much? R sin theta. So this was the difficult part. ठीक है. You understood what will be the representative element. You understood how to choose the position of that representative element, and you also found out the attributes of that representative element. What are those attributes? That the thickness would be rd theta and the radius of that ring would be r sin theta. Is that clear to everyone? ठीक है. Don't memorize this. ठीक है. घर जाओ, practice it a little. ठीक है. Think about it. Take any ball, cut it. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. 5 रुपए का प्लास्टिक का बॉल लाना, उसको काट के देखना. ठीक है. बिकॉज दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, उसी के ऊपर सब कुछ बिल्ड होने वाला है. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, यू डोंट गेट दैट कॉन्सेप्ट. क्लियर? ठीक है. सो ट्राई दिस एट होम. प्लीज ट्राई दिस एट होम. ओके. So we get a ring which has a thickness of rd theta and which has a radius of r sin theta. Okay. So our job is almost done. Now everything is purely mathematical. So how do we choose dm? No, not how do we choose dm. How do we calculate dm? Now what will be dm now? सोच के बोलो. Mass by volume. सोच के बोल. Was it what? Where? How is the mass distributed? Is it distributed in a volume or a surface? It is only distributed. अंदर तो खाली है. m by 4 pi r square. Very good. That will be m by 4 pi r square. Now multiplied by the area of the ring, the surface area of the ring. What will be the surface area of the ring? सोच के बोल. The surface area of the ring. The surface 2 pi r sin theta. Very good. Excellent. So you take this ring, and because it is a thin ring, what we can do is we can open it. ठीक है. You take this ring. So this is your ring. Okay, this is your ring. What is the radius of this ring? R sin theta. Okay, the radius of this ring is r sin theta. What is the thickness of this ring? rd theta. So when you open this ring, the circumference becomes the length and the thickness becomes the breadth. ठीक है. So this exactly the same way we did it in the last question. ठीक है. मतलब last example में what we did. Okay. So in this case, what will be the area? The area would be the circumference multiplied by the thickness. Circumference will become the length, so that is 2 pi r sin theta multiplied by the thickness. What is the thickness? rd theta. Is that clear?
एनी प्रॉब्लम? ठीक है, क्या सीखे यहाँ से? ठीक है, इन अ holosphere how do you choose a representative element? How do you find the position of the representative element? How do you find the attributes of the representative element? And finally, how do you find the area of the representative element? Is that clear? Any problem? पक्का क्लियर है सबको? कंफ्यूजन है तो पूछ लो, डोंट लेट इट लिंगर. क्लियर? ठीक है, सो दिस वुड कम आउट टू बी व्हाट? पाई गया, ये आर 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 स्क्वायर गया, तो दिस बिकम्स m/2 sin theta into d theta. Okay, now what is this? What is this matlab? This is a ring. How do you find the moment of inertia of the ring? How do you find the moment of inertia of the ring? dm into uska radius ka square, not capital R. Capital R is the radius of the hemisphere, no sorry, the sphere. ठीक है, we need to find out the radius of what? Of that ring. Mass of the ring multiplied by the radius of the ring to find the moment of inertia of the ring. ठीक है, so di would be the mass of the ring. What is the mass of the ring? m/2 sin theta d theta. What is the radius of the ring? r sin theta. The radius of the ring is r sin theta. So this will be r sin theta का square. तो यहाँ से कितना मिलेगा? यहाँ से मिलेगा di is equal to m/2 into sin cube theta d theta. ठीक है, okay, now you have to find, so to find I, so this will become mr square by 2 and the integral of sin cube theta d theta, and the limit of integration will go from, सोच के बोलना, 0 to think 0 to, it should be 0 to pi. 0, you get this ring, you go to theta, you get this entire ring, you go to 90, you get this entire ring, you go further, you get that entire ring, then finally when you are here, you have covered all the rings. Okay, so it has to go from where? It has to go from 0 to pi. ठीक है, नाउ इसका मैथमेटिक्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रल कैसे करेंगे? Correct. So you know the expansions for sine cube theta. Tell me what is the expansion for sine cube theta. Can I rub this off? This part? Okay, tell me what is the... I'm asking because मेरे को नहीं आता है. I don't remember the expansion of sine cube theta, frankly. ठीक है, इसलिए I'm asking. Tell me what is the what is that formula for sine cube theta? बोल. 3 sine. हाँ. साइन क्यूब थीटा क्या क्या? साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा तो ये क्या बोल रहा है? इट इज इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल एंगल्स. हाँ तो वही तो बोल रहे निकालने को, तो निकाल ना. तो वही तो बोल रहे निकालने को. आई डोंट रिमेंबर दैट फॉर्मूला. इवन आई का क्या मतलब? आई डोंट नीड टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला. यू नीड टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला. फिर से बोल. ऐसा ही कुछ होता है.
ठीक है, क्या होता है बोल फिर से? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4, करेक्ट, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है. ओके, नाउ एवरीथिंग इज इन इंटीग्रेबल फॉर्म. ठीक है, नाउ दिस यू कैन इंटीग्रेट. ठीक है, इंटीग्रेट करके देख लेते हैं, अगर आया तो सही, नहीं आया तो गलत. ओके, लेट्स, आई एम ओनली इंटीग्रेटिंग दिस पार्ट, साइन क्यूब थीटा. सो 1/4 इज व्हाट? 1/4 बाहर आ जाएगा. ठीक है, सो दिस विल बी द इंटीग्रल ऑफ 3 इंटू साइन थीटा डी थीटा माइनस साइन 3 थीटा डी थीटा का इंटीग्रल, एंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वुड बी 0 टू पाई. सो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 1/4 इंटू 3 साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा. माइनस कॉस थीटा में यू पुट द लिमिट्स, माइनस कॉस थीटा में, ठीक है, तो माइनस को हटा के आई हैव टोल्ड यू कैन इंटरचेंज द लिमिट्स. तो माइनस हटा दिया, नाउ दिस लिमिट कैन गो फ्रॉम पाई टू 0. ठीक है, सो दिस विल बी माइनस साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? इसका इंटीग्रल होगा माइनस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, फर्स्ट यू इंटीग्रेट साइन को नॉर्मली, तो साइन का माइनस कॉस, एंड देन वॉट एवर इज द कोएफिशिएंट ऑफ थीटा यू डिवाइडेड विद दैट. ठीक है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो इसको यहाँ प्लस कर देते हैं, और इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वुड गो फ्रॉम 0 टू पाई. ठीक है, now let's find this out. So this becomes 1/4 into 3 cos 0 1 cos pi minus 1, यानी 1 minus minus 1 मतलब 2, plus this would be 1/3 तो बाहर आ गया, and then you have cos 3 pi. cos 3 pi मतलब cos pi मतलब -1 and then cos 0 would be 1 -1 मतलब -2. So 1/3 into -2. So what does this come out to be? This comes out to be 1/4 into 6 minus 2/3. So how much is that? That is 18 minus 2, 16, 4/3. 4/3. So that comes out to be 4/3. Okay, so let's substitute it here. So the moment of inertia would be mr square by 2, and this whole thing comes out to be 4/3. So finally the moment of inertia of the sphere, hollow sphere, about its diameter is 2/3 mr square. Is that clear? Any problem? ठीक है, it's not that if you don't know sine cube theta का integral you cannot do it. You can do it in a different manner. You can change the variable. ठीक है, you can change the variable. You can solve it in terms of x. ठीक है, उसके लिए थोड़ा मेहनत लगेगा, but you can do that. ठीक है, can rub this off? But this is clear. ठीक है, ठीक है. So what we could have done is, ठीक है, what we could have done is we take an angle x, ठीक है, and then we go, sorry, not an angle, we go to a distance x and we go a further distance x. Now we are going where? On the axis. ठीक है, we are going on the axis. तो x distance पे we slice it once, and then dx distance आगे बढ़ के we slice it once. ठीक है. Now the important thing here is what is the relationship between theta and x, and what is the relationship between d theta and dx. If we find that, we can substitute that. Fine. Okay, so I'll tell you what is the relationship. This angle is theta,
this angle, this distance is r. So what is x? X is r cos theta. ठीक है, x is r cos theta, पहली चीज. ठीक है, दूसरी चीज, if I have to find out dx, what I can do is differentiate it. ठीक है, so if I differentiate it, so dx becomes what? Dx is equal to minus r sin theta into d theta. Is that correct? Any problem? ठीक है, now we can make the substitution. I'll show you how to make the substitution. I is equal to mr square by 2. तो sin cube theta को we can write it as sin square theta into sin theta. ठीक है, we can write it as sin square theta into sin theta. सही बोला था. ठीक है, okay, so we can write it as sin square theta into sin theta. तो sin theta यहाँ से लो, sin theta d theta. So this we are writing as sin square theta into sin theta d theta. So sin theta d theta को can we replace here? So this will become minus dx upon r. Correct? Now we need to write sin square theta. Sin square theta how can we find? We know cos theta. So sin square theta will be equal to 1 minus cos square theta का under root. मतलब this will become 1 minus x square upon r square. ठीक है, now we can make that substitution. So this becomes 1 minus x square upon r square. अब आगे एकदम सिंपल फॉर्म में. ठीक है, dx और फिर इसका हो जाएगा x square dx. ठीक है, now all you need to understand is limit of substitution कहाँ से कहाँ करना है. तो x क्या है? From 0 to it will go to r. Is that clear? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो आई कैन नॉट सॉल्व इट. ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हो जाएगा. क्या प्लस आर से माइनस आर? 0 to, हाँ 0 to r नहीं होगा. नहीं, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. इट विल बी फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर बिकॉज दिस इज वेयर वी हैव चोजन द ओरिजिन. तो माइनस आर से प्लस आर जाना पड़ेगा. यू आर राइट. ऑलराइट, इज दैट क्लियर? बट ऑब्वियसली तुमको साइन क्यूब थीटा का याद रखोगे वो फॉर्म, तो इट विल बी बेटर. ठीक, बट याद तो रखना ही पड़ेगा ना. साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, ये तो फॉर्मूला याद रखना ही पड़ता है. क्लास के बाद ये बातें. ठीक है, चलो. इज दिस क्लियर? कैन रब दिस ऑफ? So this is how you deal with a hollow sphere. Okay, so finally we have one more thing जिसको हम लोग कहते हैं solid sphere. ठीक है, I don't know what number was this. चलो, solid sphere. Okay, so we have to find the moment of inertia of a solid sphere about what? About its diameter. ठीक है, about its diameter. चलो, ये ले लिया diameter. Now tell me what should be the representative element? Disk. Very good. कैसा disk? So if this is the axis, कैसा disk? Concentric disk. हाँ, अगेन वही. इस बार आलू काटो. ठीक है, यू टेक बिकॉज डिस्क निकलेगा ना, फिर उसका तुम क्या जो चिप्स बनाता है, जो भी बना सकता है. ऑलराइट, सो यू टेक अ पोटैटो विच इज ऑलमोस्ट राउंड इन शेप. ठीक है, देन यू स्टार्ट चॉपिंग इट. ठीक है, सो व्हाट विल कम आउट? चिप्स नहीं, डिस्क. व्हाट विल कम आउट? डिस्क विल कम आउट. ठीक है, is that clear to everyone? ठीक है, so I make a slice over here, I make another slice over here. Now this is solid, there is material everywhere here. हाँ कि ना? There is material everywhere here. So what will come out? What will come out? Disk. ठीक है, लेज होता तो सिर्फ हवा निकलता.
Okay, so this is done. All right, so there will be disks. All right, obviously this sphere would be this solid sphere. The representative element would be a disk. Okay, but how do you choose the mark the position for the representative element? इस बार आर डी थीटा करने का काम है क्या अपने को? इस बार what we can do is we go to a distance x, make a slice, and then we go a further distance of dx, and then again we make a slice. ठीक है? So what will come out? A disk will come out. ठीक है, इसका radius is r. So what will happen? A disk will come out. Now tell me what will be the attributes of this disk? What will be the thickness of this disk? The thickness of this disk would be dx. Very good. This will be the thickness of the disk. ठीक है. Now tell me what will be the radius of this disk? What will be the... Very good. Yes, absolutely. Use Pythagoras theorem over here. So the radius of this disk would be under root of r square minus x square. ठीक है? Okay. Now we need to find out the mass of this disk. तो mass कैसे निकालेंगे? Now you have to understand this disk is what? Is it a surface? Is it a volume? What is it? It's a volume. एक surface का अगर थोड़ा thickness भी है, so this is a surface, right? This is a circular surface. और उसका थोड़ा thickness भी है. So what does it become? हाँ तो क्या हुआ? है तो सही. So this will be a volume of very small thickness. रिंग भी लिए थे तो क्या बोले थे? It is a surface of small thickness, right? When we chose a representative ring, what did we say? It's a surface. उसका क्या निकाले थे? एरिया निकाले थे ना, 2 pi x dx. We found out the area. So that area was a surface. So we say that the ring has an area, but it has a very small thickness. तो यहाँ पे what will we say? It has a volume and it has a very small thickness. That's it. Is that clear? So what is it? It's a volume. So how will you find the mass? Mass per unit volume multiplied by the volume. ठीक है? Okay. So mass per unit volume would be mass upon 4 by 3 pi r cube. Volume of a solid sphere. Then multiplied by... Sorry? हाँ एब्सोल्युटली वही तो बोल रहे हैं. ऑल राइट. अच्छा लिसन. एक रॉड का एक छोटा सा पार्ट, एक लेंथ का एक छोटा सा पार्ट, व्हाट विल दैट बी? A small part of a length would be what? Would be a length itself. A small part of the area would be what? An area. A small part of a volume would be what? A volume. ठीक है? So this is what? This is an area. We chose a small part of the area. What did we choose? We chose this. What should this be? An area. So small part of the volume will also be a volume. Clear? Okay, so this is what? This is mass per unit volume. Mass per unit volume. So I have to multiply it with the volume of the disk. What will be the volume of a disk? Area into dx. You can consider this to be a cylinder. है कि नहीं? You can consider this to be a cylinder. Right? ठीक है. So it is a disk which has a small thickness. So what is it? A cylinder. तो क्या हो जाएगा? Pi the radius square multiplied by उसका thickness. So what is the radius? This is the radius. So this will be pi r square minus x square multiplied by what is the thickness? The thickness is dx. Is that clear? Any problem? Okay, so this is the dm. dm निकल गया. So dm is 3m by 4 r cube
multiplied by r square minus x square into dx. Now what do we need to find out? The moment of inertia. So what will be the moment of inertia of this disk? dm into uska radius ka square divided by 2. Don't forget divided by 2. Disk ka is mr square by 2. Disk ka moment of inertia is mr square by 2. Right? So what is the mass? This is the mass. Multiplied by उसका कहाँ पे x square? No, no, that is for a point mass. वही तो सबसे पहले बोले, if the representative element is a point mass, तो distance ले लो. If it is an extended object, उसका moment of inertia ले लो. Right? So we are calculating the moment of inertia of the disk. So moment of inertia of the disk is mass of the disk into the radius of the disk का square divided by 2. तो mass of the disk आ गया. अब उसका radius क्या है? उसका radius क्या है? r square minus x square का अंडर रूट, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा. मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ r square minus x square. by 2. ठीक है. So this comes out to be what? This comes out to be 3m upon 8r cube. And then what do we have? We have r square minus x square और r square minus x square. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा r square minus x square का square and then multiplied by dx. ठीक है. Now how do we integrate this? हाँ ठीक है. So I निकालने के लिए we'll have to integrate this from where to where? We'll have to integrate it from minus r to r. Absolutely, बिल्कुल कर सकते हो. Yes, you are absolutely right. ये आगे जाके when you study definite integration there is a property like this. ठीक है. What is the property? Definite integration में there is a property if it is minus a to plus a fx dx. ठीक है. Minus a to plus a fx dx. So what you can do is you can write it as 2 into 0 to a fx dx. ठीक है. और ऐसा सोचो हम लोग क्या किए, ये भी मत सोचो. We find out the moment of inertia of the hemisphere and the moment of inertia of this hemisphere will also be the same. So if you integrate from 0 to r, you're absolutely right. If you integrate from 0 to r, you'll get the moment of inertia from here to here. ठीक है. उसका into 2 कर देंगे तो पूरे का मिल जाएगा. Is that correct? तो इसको क्या कर देना है? Into 2 कर दो. It's the same thing. Correct? Is that clear? Any problem? Okay. Now how do we calculate that? That comes out to be what? 3m upon 4r cube. So this is what? R square minus x square का square. So you'll have to expand that. ठीक है. Expand करोगे तो क्या मिलेगा? Expand करोगे तो मिलेगा r to the power 4 plus x to the power 4 minus 2r square x square और ये पूरे का dx. And the limit will go from 0 to r. ठीक है. Can I rub this part? So this will be 3m upon 4r cube. ठीक है. अब थोड़ा ना डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है. बच्चों वाले जैसा इंटीग्रेट नहीं करते हैं. r to the power 4 है, कांस्टेंट है, तो क्या करेगा? dx का इंटीग्रल आएगा. सो dx का इंटीग्रल इज x. लिमिट डालोगे you'll get r. मतलब r to the power 4 into r यानी r to the power 5. यहाँ पे what will you get? x to the power 4 into dx यानी x to the power 5 divided by 5. मतलब क्या आ जाएगा? r to the power 5 divided by 5. ठीक है. माइनस 2r square is a constant. तो x cube by 3 यानी कि r cube by 3.
तो ये r⁵/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो तो कितना आता है, रिड्यूस होके 3mr²/5। 3 और 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, मतलब कहीं हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक किए, होना तो चाहिए। लेट्स सी यार, मेरे से मत कैलकुलेट कराओ यार। ओह, so this would be 15 plus 3 minus 10, है ना, 15 plus 3 minus 10 divided by 15, तो कितना आ जाता है, 5 plus 3 8, तो दिस इज 3/4 m/r³, और ऊपर में क्या है मेरे पास 8 है, नीचे में 15 है, तो ये गया एंड देन ये गया, सो दिस कम्स आउट टू बी 2/5, और r⁵ है, सो ये कैंसिल होके दिस विल गिव यू, ठीक है। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a solid sphere, uniform solid sphere, about any of its diameter is 2/5 mr². Obviously you have to remember this. Clear? Any problem? ठीक है, यहाँ पे क्या सीखा, how do you deal with a solid sphere, ठीक है। solid sphere you are going to break this up into discs, ठीक है, and then how do you choose, you choose a disk at a distance x from the center of a thickness dx, ठीक है, clear, ठीक है। अब I'll ask you a question, ठीक है, I'll check your observation. When we chose, this is done now, this is you're clear with this, ठीक है, with the process and all, you're clear, ठीक है, okay। अब मेरे को ये बताओ कि when we chose a hollow sphere, when we chose a hollow sphere, तो the ring which came out, उसका thickness हम लोग ये लिए थे। If we choose a solid sphere, why haven't we chosen this as the thickness, we have chosen this as the thickness, बोलो। क्या क्या फिर से बोल, करेक्ट 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 करेक्ट, so what you mean is the ring is something like this, my drawing is horrible so I don't know how to draw it, I don't know how to draw this, कैसे draw करेंगे, let me see, ठीक है, I cannot draw this, ठीक है, so I'll explain it in a different manner, ठीक है। So this ring that came out, had a thickness, had a slant height, that slant height was the thickness, ठीक है, this slant height, this slant, that was the thickness, ठीक है, because most of the ring has this thickness, बीच में तो कुछ है ही नहीं, बीच में कुछ है ही नहीं, so this is not the thickness, ये जो बीच में मिलेगा मेरे को, this will not be the thickness, ये जो side में मेरे को slanting मिलेगा, that will be the thickness, you get this, मतलब if in a cone, so this is a hollow cone, ठीक है, the same will apply to a cone, so you make a slice over here, you make a slice over here, so what will come out, a ring will come out, but what is the thickness of that ring, ये slant height है ना thickness, it is not this one, it is this one, that is the thickness of the ring, is that correct, clear? So in case of a hollow sphere we got a ring, और ring का most part के लिए thickness क्या था, this was the thickness, is that clear, ठीक है। Now consider it to be a solid sphere, consider it to be a solid sphere, when we cut at two places, what do we get a disc like this, so this is solid, ठीक है, there is material everywhere. Now what would you say the thickness is, because most of it has this thickness, most of it had this thickness, सिर्फ side का part में थोड़ा सा extra निकला हुआ है, that is very small, so for most part of the disc what is the thickness, this is the thickness, ठीक है, so you have to be careful with this also.
For a when we cut a hollow hemisphere we get a ring, उसका thickness क्या होगा जो उसके circumference पे है, right? But for a solid sphere when we cut it comes out to be a disc, a solid disc, ठीक है? तो उसका thickness क्या होगा? This will be the thickness. Is that clear? ठीक है. Now there is a homework for you. What is the homework for you? नहीं, आलू काटना, प्याज काटना, सलाद बनाना वो बाद में करना, नहीं वो भी करना, ठीक है? But hollow cone and solid cone about this axis. हाँ, कौन सा? काट के दिखाएंगे. बर्थडे कैप लेके आना. तेरा बर्थडे भी एक बर्थडे कैप लाया है, लेके आएंगे और वो काट के दिखाएंगे, ठीक है? Alright, so that's the homework. Solid cone, hollow cone. उसका moment of inertia. ठीक है? Can I rub this off? ठीक है? All these results you have to remember. तो अच्छा रहेगा if you make a table. If you make a table and write that. ठीक है? Okay, so this was, you can find the moment of inertia of any uniform geometrical shape. मतलब कुछ भी random दे देंगे तो obviously you won't have a function to define different properties, ठीक है? So उसके लिए moment of inertia we cannot find out. But for any geometrical shape, regular geometrical shape, you can find the moment of inertia using integration, ठीक है? Okay. Now there are two theorems which can help us find moment of inertia, ठीक है? One is known as the parallel axis theorem, and the second one is known as the perpendicular axis theorem, ठीक है? So if we know the moment of inertia of certain objects about certain axis, we can find the moment of inertia of those objects about a different axis, ठीक है? We can do that using these two theorems, ठीक है? Parallel axis theorem, perpendicular axis theorem. So first let's start with parallel axis theorem, but we have to be very careful when we are using parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. They come with a condition, okay? We'll look at that. So suppose I have a rod. So for this rod, I know the moment of inertia of this rod about the axis passing through the center, okay? I will call this axis ICM, okay? Why I'm calling this axis ICM? Because it is passing through the center of mass, okay? Now if I want to find out the moment of inertia of this rod about a different axis, let's say about this axis, okay, then I can use parallel axis theorem. What does the parallel axis theorem say is the moment of inertia about any other axis which is parallel to this axis, इसीलिए नाम है parallel axis theorem. I cannot apply parallel axis theorem on an axis which is going like this. Why? Because these two lines are not parallel. So when we are applying parallel axis theorem, both axes have to be parallel, okay? So first of all, this has to be an axis which is parallel to this axis. Then it says that the moment of inertia would be equal to ICM plus md square. ICM plus md square. And what is d? D is the perpendicular distance between those two axes, okay? And what is cm? ICM is the moment of inertia through the center of mass. The moment of inertia of the axis passing through the center of mass. और किसी के लिए ये apply नहीं होगा, right? I cannot do this. I1, I2, इसका distance d. Can I write I2 is equal to I1 plus md square? Can I write this? I cannot write this because this has to be the axis passing through the center of mass. I cannot use any other axis in this formula. Is that clear?
ठीक है. So this I is equal to ICM plus MD square comes with two conditions. What are those two conditions? First of all, both the axes have to be parallel, hence the name parallel axis theorem. And secondly, this has to be the moment of inertia about an axis passing through the center of mass. Is that clear? Any problem? Okay. Now if the rod has a mass m and length L, can you find the moment of inertia of the rod through this axis, through an axis passing through the end? Find that out. ml square by 3. Yes. ठीक है, so let's apply that. ICM, what is ICM? ml square by 12. We know this already. Plus md square, what is d? d is l by 2. ठीक है, so ये हो जाएगा l by 2 का square. तो इसको करेंगे calculate, तो we'll get ml square upon 3. This is also a result you should remember. ठीक है, at least rod के लिए तो you should remember. ठीक है, ml square through the center, ml square by 12 through the center, and ml square by 3 through the end, through an axis passing through the end. ठीक है, is that clear? Now you can use this formula to calculate moment of inertia about any axis. जो भी axis उसके parallel दे रहा है, you can find that out. Is that clear? Any problem? Okay, can rub this off. So the derivation for these two theorems I'm not doing because the derivations are not required. If you are interested, you can refer any standard textbook. Tick? Okay. Suppose I have a ring. So we talked about which axis? We talked about this axis. Okay. Now if I asked you to find the moment of inertia about this axis, how can you find that out? Parallel axis theorem, very good. What will be the moment of inertia? It has a mass m and radius r. I want you to find out the moment of inertia about an axis which is passing through the circumference and perpendicular to the plane of the ring. Very good. I is equal to ICM plus mr square. तो ये कितना हो जाएगा? What is ICM? ICM is mr square plus mr square is equal to 2mr square. ठीक है? If this were a disk, what will be the moment of inertia? mr square by 2 plus md square. What is d over here? d is the radius. ठीक है? So this will be मतलब 3mr square upon 2. ठीक है? And so on. ठीक है? Any problem? So you can find moment of inertia like this using parallel axis theorem. ठीक है? Any problem? Next we want to deal with perpendicular axis theorem. So perpendicular axis theorem also comes with conditions. Okay, what is the first condition? It is only applicable for lamina. Lamina matlab planar objects. It is only and only applicable for planar objects. It is not applicable for three-dimensional objects. Is that clear? It can only be applied if an object is 2D. That is the first condition. Okay. So what this theorem says is Iz is equal to Ix plus Iy. Okay, so what it tells you is you choose three axes. And what kind of three axes? Three mutually perpendicular axes. Yes, absolutely. So you have to choose three mutually perpendicular axes. ठीक है, एक को Ix कहोगे, एक को Iy कहोगे, एक को Iz कहोगे. ठीक है? Then it says that the moment of inertia about the z axis will be equal to the moment of inertia through x axis plus moment of inertia through y axis. ठीक है? But इसके ऊपर भी condition है. ठीक है? What is the condition? Ix and Iy are in the same plane.
whatever is the plane of the object, ix and iy has to be in the same plane. Is that clear? ठीक है, it has to be in the same plane. Iz has to be the one perpendicular to the plane. All right, ix and iy have to be in the same plane. ठीक है, इस condition पे ही you can use this theorem. All right, okay, so how do we apply this? Let's see how do we apply this. अच्छा, हम लोग did we calculate the moment of inertia of a square or a rectangle? नहीं किया ना moment of inertia of a rectangle. Very good, homework. चलो तुम लोग से ही पूछ लेते हैं. So you have to find the moment of inertia about an axis passing through the center. So you have to find the moment of inertia about this axis. ठीक है, बस मेरे को इतना बता दो. How do you choose a representative element? एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे. वेरी गुड. सो x डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे dx. ठीक है, आगे तुम लोग कर लोगे. ठीक है, नहीं अभी नहीं, घर पे. ठीक है, ट्राई डूइंग दिस एट होम. ओके, बट आई कैन टेल यू दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया for this one would be ml square by 12 if we choose this axis, ml square by 12, or if we choose this axis the moment of inertia would be mb square upon 12. Symmetric है, समझ में आ रहा है? ठीक है, okay, or I can give you an alternate derivation. ठीक है, I can give you a simpler alternate डेरिवेशन. देखो कैसे करना है. हाँ, स्ट्रिप समझ के, बिल्कुल रॉड टाइप समझ के. हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, देखो, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ब्रेक दिस रेक्टेंगल इनटू थिन रॉड्स. ठीक है, अब थिन रॉड का मास मान लेते हैं dm. लेट्स अज्यूम द रॉड मास ऑफ द थिन रॉड टू बी dm. ठीक है, व्हाट इज द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड? व्हाट इज द मास ऑफ द रॉड? व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड? dm l square upon 12. This is the moment of inertia of that rod. ठीक है, so if I calculate moment of inertia, I'll have to integrate this. When I integrate this, what are the constant terms? L constant है कि नहीं है? For all the rods, for all the strips, L will be the same. मतलब L is a constant. 12 will come out. तो ये कितना हो जाएगा? dm का इंटीग्रल. dm का इंटीग्रल क्या होगा? The total mass. Clear? ठीक है, तो सेम मैनर में हम लोग रिंग का भी डिराइव कर सकते थे. ठीक है, आई एम गोइंग अ लिटिल ऑफ ट्रैक, बट ये जानो तो अच्छा है. ठीक है, वी कैन. ठीक है, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग, व्हाट वी हैव डन इज चूज अ स्मॉल एलिमेंट dm. ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस dm फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द एक्सिस? इट्स r. तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इट विल बी व्हाट? dm इनटू r स्क्वायर. Now any dm we choose is going to be on the circumference, और उसका distance from the center would be the same, equal to what? r. So what is r? Constant. बाहर निकाल लो. So this becomes r square and integral of dm. तो ये कितना हो गया? mr square. खत्म. Is that clear? Any problem? ठीक है, same manner में हम लोग क्या कर सकते थे? अच्छा, did we talk about क्या कहते हैं, नहीं यार, सिलेंडर. हाँ, वी डिडंट टॉक अबाउट सिलेंडर ना. अच्छा रुक जाओ, सो इसको नोट करके कीप दैट इन होल्ड. सिलेंडर की बात कर ही लेते हैं. किस में? मेरे को क्या मालूम. व्हाट इज द टाइम? हाँ, ओ यू नॉट फीलिंग वेल, तो जा घर जा. मतलब किस तरह का नॉट फीलिंग वेल? फीवर, फीवरिश, हेडेक हो रहा है? सैरिडॉन खाएगा? ओ, तो फिर तू चला जा ना, क्यों स्ट्रेस ले रहा है? फिर तू चला जा, रिकॉर्डिंग देख लेना. ठीक,
ठीक है, बट इफ यू गो आउट इन द सन मतलब दिक्कत होगा. हाउ डू यू गो? पास में कितना दूर है? हाँ 2 मिनट्स है, ठीक है. चल चल. ओके सो इसको नोट कर लिया. दिस पार्ट यू हैव नोटेड डाउन. ठीक है, कीप दैट ऑन होल्ड. लेट्स टॉक अबाउट सिलेंडर, देन वापस इस पे आते हैं. ठीक है. ठीक है, सिलेंडर में भी यू विल हैव अ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर. ठीक है, हॉलो सिलेंडर इसका मास m, लेट्स से रेडियस r. ठीक है, a solid hollow cylinder, mass m, radius r. Okay, if you have to find the moment of inertia, it is obvious what will be the representative element. Rings, इधर एक कर, इधर एक slice कर. What do you find out? A ring will come out. ठीक है, does not matter. I'll tell you why. पता चल जाएगा, automatically पता चल जाएगा. So this ring which comes out has a radius, and let's say that इसका mass is dm. हाँ, एक्सिस कौन सा है? ये है एक्सिस, जो सिलेंडर का एक्सिस है वही एक्सिस. ठीक है. Okay, so we're talking about this axis. So if we choose a ring as the representative element, and let's assume that the mass of that representative element is dm, what is the radius of that representative element? r. ठीक है, what is it? A ring. So what will be its moment of inertia? dm into r square. Correct. ठीक है. Now if you integrate this, what are the constant terms? Is r a constant or a variable? It's a constant. You choose any ring, सबका radius क्या है? r. So that comes out. Then dm का integral. Done. ठीक है. अब you tell me what will be the moment of inertia of a solid cylinder. Now it will be mr square by 2. Excellent. ठीक है, क्योंकि you will get discs, सबका dm ले लो. So the moment of inertia of the disk would be dm r square by 2. R square is a constant, बाहर निकालो, so you'll get dm का integral m. ये मेथड पहले ही बता देते, ये मेथड सब में नहीं लगेगा ना. हाँ, ये मेथड सब में नहीं लगेगा, जहां पे लग रहा है that's why I'm telling you. Change the axis. Very good question. Very good question. So you want to choose an axis which is like this probably. hollow cylinder का नहीं, hollow cylinder का तो mr square है. और इस axis के बारे बोल रहा है. How do you know? हाँ, you have used that. You have used that already. Correct. You have used that already. तो इसका नाम लोग once we see perpendicular axis theorem फिर इसको देखते हैं. I'll make it simpler. ठीक है. So we'll have to use otherwise integrate करके you can easily find out. Integrate कैसे करोगे? So axis से x distance पे dx thickness पे you'll take a ring. ठीक है, और उसके बाद का कहानी तुमको पता है. ठीक है. So add solid cylinder and hollow cylinder to your table. ठीक है, and then you will obviously go home and derive for cone and add that also. ठीक है. Now let's come back to perpendicular axis theorem. ठीक है. So perpendicular axis theorem के लिए what did we see? It is applicable for planar bodies. Second, there has to be 3 mutual perpendicular axes. Third thing, ix and iy have to be in the same plane. ठीक. Okay, so let's try and apply that for a square. अब स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर का कैसे निकालेंगे? स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक. सो साइड ए, ठीक है, साइड ए
What will be the moment of inertia about this axis? ma square by 12. Any problem? ठीक है? Okay, very good. Now what I'm asking you to find out is, I'm asking you to find out the moment of inertia about this axis. मतलब this axis मतलब passing through the center and perpendicular to the plane. ma square by 6. How do we figure that out? Correct. So what we'll do is, we take an axis and name this ix. We take this axis and we name it iy. Are ix and iy perpendicular to each other? Are they in the same plane? Very good. Then the axis which is passing like this would be iz. Is that correct? ठीक है. अब सारी चीजें, now everything is according to perpendicular axis theorem. Now we can apply perpendicular axis theorem. ठीक है. So if we apply perpendicular axis theorem, that will be iz is equal to ix plus iy. Correct? All the criteria are satisfied. ठीक है. Now what do we see? That ix and iy are going to be same, because इसमें और इसमें, is there any difference? There is no difference. So ix and iy will be equal to, will be the same. ठीक है. तो iz कितना हो जाएगा? iz हो जाएगा twice of ix और iy. And what is ix or iy? ma square by 12. Is that clear? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग सिलेंडर में लगा सकते हैं. नहीं, सिलेंडर में डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्टली लगा सकते हैं. ठीक है, बताते हैं. वेट. Okay, is this clear? Okay. Now if I ask you to find the moment of inertia about the diagonal, find the moment of inertia about the diagonal. Can you find that out? ma square by 12 रहेगा. कैसे ma square by 12 रहेगा? Correct, correct. ठीक है. Now listen. So iz we know already. Now what we can do is, we can choose this as ix and we can choose this as iy. Can we do that? Why can we do that? Because they are perpendicular to each other in the plane also. ठीक है. So what is this iz? iz is still perpendicular to both these axes and perpendicular to them. तो फिर से लगा सकते हैं iz is equal to ix plus iy. iz we have already calculated. So iz is equal to ma square by 6. Now this is equal to ix plus iy, which is the same as 2ix. The diagonals are absolutely same. तो ix कितना आ जाएगा? ma square by 12. तो diagonal के about भी the moment of inertia is ma square upon 12. Clear? Can I rub this off? ठीक है, अब रिंग की बात करते हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट अ रिंग. रिंग में वी नोट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. वी हैव कैलकुलेटेड दैट. नाउ इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, क्या होगा? Can you apply perpendicular axis theorem? mr square by 4 क्यों? रिंग है, रिंग है, रिंग. mr square by 2. वेरी गुड, इट्स अ रिंग. ठीक है. कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल ix एंड iy हैव टू बी प्लेन. तो ये ले लिया ix एंड दिस वी हैव चोजन एज iy. सो नेचुरली व्हाट इज iz? दिस इज iz. तो iz विल बी इक्वल टू व्हाट? ix प्लस iy. iz कितना है? iz is mr square. We know that already. And ix and iy are identical. तो ये कितना हो जाएगा? इसको 2ix लिख लो. So ix is equal to what? mr square by 2. So the moment of inertia of a ring about its diameter would be mr square by 2. Correct? Okay. Now can you tell me what will be the moment of inertia of a disc about its diameter? mr square by 4. ठीक है? So simple. Any problem? ठीक है. But you just have to keep those conditions in mind.
कहीं भी मत लगा देना, ठीक है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द कंडीशंस. ओके. आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई में एक्स और वाई प्लेन में ही होना चाहिए. जेड इज द वन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है. एंड यू कैन ओनली अप्लाई दिस टू अ प्लेनर ऑब्जेक्ट. अब तुम्हारा क्वेश्चन, अब तुम लोग खुद बता दो. दिस इज टेकिंग क्यू फ्रॉम दिस, ये बताओ. हम्म. फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम. We know about this axis. Okay, very good. Okay. इसको आई एक्स ले लेंगे और इसको आई वाई ले लेंगे. हाँ तो हाँ, ये नीचे का सरफेस. बट मेरे को तो इसके अबाउट निकालना है ना. तब पैरेलल एक्सिस यूज कर लेंगे. तो यू आर टेलिंग मी कि इसके अबाउट एक ऐसा एक्सिस रहेगा और एक ऐसा एक्सिस रहेगा. सो वन वुड बी आई एक्स, वन वुड बी आई वाई, एंड दिस एक्सिस वुड बी आई जेड. दिस इज वॉट यू आर सेइंग. नहीं तो व्हाट आर यू सेइंग? नीचे में तो हाँ, नीचे में रिंग है, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है. चलो रिंग है नीचे में, देन व्हाट? हाँ तो वही तो किया है. रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा. ओके, माय मिस्टेक, ठीक है. मैं मतलब मेरा ड्राइंग की वजह से प्रॉब्ली. ओके, दिस इज द सिलेंडर. ओए रुक, सुन. दिस इज द सिलेंडर. व्हाट आर यू सेइंग? ये आई एक्स यही बोल रहा है ना, ये आई वाई यही बोल रहा है, और ये आई जेड यही बोलना है ना. हम भी वही ड्रॉ किए थे, बट ठीक है. एनीवे, ओके. कैन यू अप्लाई दिस? यस और नो? यस और नो? प्लेन किधर है? दिस इज 3D. अरे तो यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंटायर थिंग ना. हाँ. ओके, बट एक्सिस कौन सा है तुम्हारा? दिस इज द एक्सिस, ठीक है. नाउ लेट मी ड्रॉ. अब तो समझ गया ना. नाउ लेट मी ड्रॉ. यू आर नॉट सीइंग द प्रॉब्लम, ठीक है. व्हाट यू आर टेलिंग मी कि एक यहां से रिंग काट के निकाल लेते हैं, ठीक है. ठीक है, ये एक्सिस है मेरा, तो तुम बोल रहे हो कि एक रिंग काट के निकाल लिया. मेरे को आई जेड पता है, तो आई एक्स आई वाई निकल गया. तो आई हैव फाउंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द सिलेंडर? बट इंटीग्रेट तुम कब करोगे ना? when the moment of inertia for all those would be dm into r square. Imagine this ring, imagine this ring. अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, will that be dm into r square by 2? will that be dm? हाँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं, राइट. बट अगेन मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. आई कैन नॉट डू दैट डायरेक्टली. प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? ठीक है. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग डिपेंड्स अपॉन दिस डिस्टेंस. हाँ कि ना? इवन इफ यू आर अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, करेक्ट. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, लेकिन यू देन हैव टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ द रिंग्स. डी क्या? एक्स वेरिएबल, हाँ, दैट डिस्टेंस वुड बी अ वेरिएबल, करेक्ट. वैसे डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते अबाउट दिस एक्सिस. क्लियर है? ठीक है. सो द आइडिया इज सिंपल. एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स थिकनेस का रिंग ले, देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो. सो इफ यू चूज एक्स डिस्टेंस पे, यू आर चूजिंग अ रिंग ऑफ थिकनेस डी एक्स. उसका मास निकाल लोगे, आई नो. उसका क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे. अबाउट विच एक्सिस?
you can find the moment of inertia about this axis. Then using parallel axis theorem, you can find the moment of inertia about this axis. Then you can integrate. Okay, so it's not so straightforward, but obviously it's doable. Clear? Any problem? Okay. एक मीडियम पिज्जा का कितना स्लाइस होता है? 6 स्लाइस होता है ना? अच्छा, यू कैन चेंज दैट, ठीक है. Okay, so one slice of a medium pizza is left. बाकी सारा ईशान खा लिया. Okay, so 1/6 part of that entire pizza is left. The pizza which is left has a mass m. Okay, so you need to tell me the moment of inertia of this pizza slice about this axis. अब बोलोगे पिज्जा खाते हो ये सब कौन सोचता है? सोच के बोलो, सोच के. पासिंग थ्रू, हाँ परपेंडिकुलर, तो एक्सिस ऐसा बना है ना. हाँ, दिस इज 1 स्लाइस इज लेफ्ट. ठीक है, मीडियम पिज्जा हैज 6 स्लाइसेस, उसका 1 स्लाइस इज लेफ्ट, उस 1 स्लाइस का मास इज m. ठीक है, सो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस. mr² by 2 ही होगा, राइट? करेक्ट. ठीक है, सो द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स इज फर्स्ट कंप्लीट एवरीथिंग. ठीक है, सो कंप्लीट दिस पिज्जा. So you add how many? 5 more slices. Then what does it become? A disc. ठीक है, but what will be the mass of that disc? Very good. The mass will be 6m. Then what will be the moment of inertia? 6m r² by 2. ठीक है, then इसका now you have to ensure that all these parts that you are talking about, they are identical. All the 6 parts have to be identical. तभी इसका moment of inertia would be 1/6 of the entire. Correct? Okay, so फिर क्या हो जाएगा ये? This will become mr² by 2, 1/6 करके. Is that clear? Any problem? ठीक है, so इस kind में you can get problems like this. ठीक है, कि you have a remaining portion of a larger portion. तो उसके लिए what you have to do is complete the entire thing. Make sure that the moment that all those pieces that you are joining are identical. तब उसका फिर 1/5 1/6 जो करना होगा करना. हाँ. अगर वो एंगल 60 डिग्री हो तो फर्क क्या पड़ता है? मतलब बाकी सब लोग जितना भी हो सके वो 70 हो 30 हो ऐसे भी हो सकता है कॉम्बिनेशंस. बाकी सब slices. So that's what I said ना कि एक ही स्लाइस बचा है. तब फिर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. आइडेंटिकल नहीं हुआ तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. ऐसे नहीं कह सकते हैं.
So that vertical line is the axis and this is the rod. ठीक है? So find the moment of inertia of the rod about the axis. ये axis है. This is the axis, this is the rod. So find the moment of inertia of the rod about that axis. Correct. ये axis है, rod ऐसे घूम रहा है. ट्राई करो. इट्स अप टू यू. तुमको सोचना है कि इसको थ्योरम से सॉल्व हो सकता है कि नहीं, या फिर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा. नो, दैट इज फॉर यू टू थिंक. ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3. करेक्ट. मतलब देखो पहले से रिजल्ट पता था क्या? क्या कर देंगे? ठीक है. मतलब इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा. हाँ, ठीक कर. खाली एल साइन थीटा. एक बार ट्राई करो, इंटीग्रेट करके ट्राई करो.